तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। तो भाई आज मैं खेलने जा रहा हूँ मैक्स पेन 3। ठीक है, बचपन में मैंने इसको बहुत खेला था। तकरीबन पहला पार्ट भी मैं खेल चुका हूँ उसका, और दूसरा पार्ट भी खेल चुका हूँ। मैंने कहा चलो यार आज तीसरा ट्राई करते हैं। तो बहुत सर्च करा इंटरनेट पे जाके, काफ़ी चीज़ें देखी, लेकिन मिला, लेकिन एक मसला छोटा सा हुआ है कि इसकी लैंग्वेज का इशू है। रशियन लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो हम खेल रहे हैं बैठ कर। ठीक है, बाय द वे इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा छोटी मोटी सेटिंग कर रहा था कि मेरे जो है स्ट्रीम का सिग्नल जो है काफ़ी पुअर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें मैं ज़्यादातर लगा हूँ अभी। बस मैं 5 मिनट में इसको और स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मिनिमाइज और गेम प्ले पे फोकस करते हैं। चलो ठीक है, तो भाई स्टार्ट कर देते हैं हम फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और ये हमारी स्टोरी शुरू हो गई है। और ये हमारा बंदा जो है वो बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा है भाई, और शराब भी पी रहा है। तो ये उठा तो कोई ना कोई सीन होगा इसके साथ। तो भाई ये मेरे ख्याल से ड्रीम में जा रहा है। हाँ, इसकी पुरानी यादें। So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. एक मिनट जरा मैं होल्ड कर लूँ। और कुछ है On economics. अब सही है। That's funny. थोड़ा सा जो है मैंने गेम का वॉल्यूम कम करा ताकि मेरी आवाज़ प्रॉपर स्ट्रीम में सुनाई दे। Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. And something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. बड़े The guy बंदे next to आए him. हैं पार्टी के, He's some kind ये of cop. बेचारा ये तो I मरेगा think, I'm not लाजमी। sure. Serious पता नहीं though. मरेगा नहीं Big-end मरेगा, cop, शायद मरेगा। anti-gang sort of thing. ये और can't इसका remember his पार्टनर जो है ना, ये साथ में बैठ के पी रहे Who's this हैं, guy? नशे कर रहे हैं। That guy's a plastic surgeon or some kind of ठीक है, surgeon. नशे जो कर Tummy रहे tucks हैं, and cock ये जो implants. है मारेंगे बंदों को Look at बैठ के। Marcel. बाद में जो Still है ना dances like a इसके fool. साथ थोड़ा मसला होगा बंदे Guess के that's what साथ। a European वो आगे की education स्टोरी and है, a वो आगे co-capital देखेंगे do तो पता drinking चलेगा। Marlboro लेकिन was इतना like. नहीं पता, पहली दफ़ा Very खेल रहा हूँ funny, मैं, तो Max. नया एक्सपीरियंस है, नई excuse me. चीज़ें हैं सारी, नई क्वालिटी मिली एक गेम की। GTA 5 से भी I was बेहतरीन mostly गेम है भाई। working for Rodrigo मुझे Branco, जो है सबसे a ज़्यादा गेम local अच्छा लगा है businessman. स्लीपिंग डॉग, Built things, जो did GTA some 5 की टक्कर charity, का है, और had things दूसरा named था after him, won मार्वल awards, स्पाइडरमैन, owned things, हिटमैन people. एब्सोल्यूशन, One असैसिन्स of the क्रीड trophies 3, he had won was his ड्रैगन wife, फोर्स स्पार्टन 0, Fabiana. और
She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. अब हम जो है ढूंढेंगे बंदे और ढूंढ के एक को मारेंगे मैं तो भाई पूरा जॉन विक बन Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. It was time to choose, a nasty fall or a bullet to the head. ऐसे बंदी करनी है ये ऐसी चीज कमाल है यार ये पहले वाले में नहीं थी मेरी तो खत्म नहीं हुई है पहली बार केवल सेंसिटिव है मार्किंग ओनली हेड मारा भाई That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. भाई गेम की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन मुझे जाना किधर है ये तो पता नहीं है मुझे She was out on one of the balconies, and I hoped, not about to be thrown off it. जाना किधर है अबे तेरे को यहाँ पियानो बजाने के लिए रखा हुआ है क्या वो गेम खेल It wasn't the time, and I was still a little rusty, but the tune was coming together. Just as this new start of mine was about to come to a shuddering halt. Sooner or later, I'd have to go out there and see what was happening. Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Come on! It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Tranquila! अभी देखो नीचे कुछ भी नहीं था आपको पता ना Nice work! Hey, you need a hand? No, you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. अच्छा इसमें है इंग्लिश लेकिन सबटाइटल वगैरह जो है सारे रशियन में मुझे ये पता नहीं चला कि इसका जो है ना इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको मार्वल स्पाइडरमैन में तो ऑप्शन था लेकिन इसमें नहीं है साला I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. Where is he? कर लेता हूँ और मैं हिटमैन तो अलग गेम है लेकिन हिटमैन मुझे नहीं करना They weren't waiting on my say-so. I had to move. Okay, तो शॉटगन मिल गई है मुझे और उसके बाद तो
गोली उठा लेता हूँ। ये 2 बंदे तो मैंने मार दिए यार। ये बताओ कि हील कैसे करें? तेरी इसकी ऐसी की तैसी। बहन भी गिर गिरी। फुल वीडियो भाई। अच्छा तो स्लोमो ऐसे का हुआ। छेद देखो कैसे होगा इसका। मैं जितना चाहूँ मार सकता हूँ। बोलिए यार पहले ये बताओ कि मेडिकेट कैसे मारेंगे? प्रेस 9 प्रेस 9। I had to move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive. Almost as much as I did. The control box was on the wall to the left of the gate. मेरी गन छूट गई थी यार। उन्होंने बहुत मारा यार मेरे को। मेरा पूरी एचपी खत्म कर दिया है। लेकिन बंदा को देखो फिर भी गड़ा हुआ यार। लेकिन पहला जो था ना, पहला था यार। करना क्या है अब जल्दी बताओ। अच्छा है GTA 5 की तरह ही कवरिंग लेने में वीडियो की तरह। The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? about getting blood on your stash.